ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के We welcome all of you to today's Śrīmad-Bhāgavata Gita class. और हम अध्ययन कर रहे हैं गीता के We are studying तृतीय अध्याय का Bhagavad Gita, 3rd chapter, verse 41. में हमने सुना कि भगवान ने बताया In the previous class, we heard Bhagavan said, स्थान कहाँ पर है। where is this Kama situated? 37वें श्लोक में काम को वेरी बताया था कि Because in the 37th verse, he had referred to Kama as an enemy, अध्यात्म मार्ग पर that any person who wants to परम वैरी follow the spiritual path, और वैरी होने के कारण for him, this is the greatest enemy. And that is why this enemy should be destroyed. स्थान को पता लगाना है तो उस And in order to destroy it, we should know its locations. Where is it seated? ज्ञानम आवृत्त देहिनम। और ये किस प्रकार से हमारा अनर्थ करता है And how it creates anarthas for us. Bhagavan explained that process also. He explained that it covers our wisdom, our discrimination. गुण है
Here, jnana refers to viveka. This is the main quality of buddhi, that is viveka, or doing discrimination, understanding what is right, what is wrong, so that we can decide what we should do and what we should avoid. But if that faculty of discrimination itself gets covered, then we are unable to discriminate between right and wrong, and then we fall into misery. That's why he explained that तो ये जो सम्मोहन है ये this अनेक प्रकार से bewilderment होता है, can happen in many ways क्योंकि इंद्रिय, मन और बुद्धि तीन इसके because स्थान the बताए। वास्तव senses, में तो mind, and intelligence, अहंकार भी three है, locations मैंने were पिछले mentioned. प्रवचन में भी कहा था। Ahankar is also there, as I told in the तो हर previous एक स्थान class. पर ही So इसको इंद्रिय को ढकता है। it covers the senses at every क्योंकि level जैसे इंद्रिय है तो इंद्रिय का because, वास्तव में like, कार्य है केवल senses विषय are के there. संपर्क में आकर The उसकी सूचना देना कि only job of senses क्या is to विषय है। contact the sense objects and लेकिन relay the इंद्रिय information that what it जब is. काम से ढक जाती है या काम But से when senses प्रभावित get होती है covered तो by इंद्रिय को kama, विषय अच्छा लगता है। then they वास्तव start में liking इंद्रिय में the अच्छा बुरा sense कुछ नहीं है। objects. इंद्रिय Actually, there केवल is nothing good or bad in उपकरण the है, senses. इंस्ट्रूमेंट It है। is just an instrument. लेकिन जब उसमें काम का प्रभाव होता है तो But इंद्रिय when it को वो is चीज़ influenced अच्छी by लगती kama, है। then the जो senses पहले भी start कहा था, liking. इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो। और मन, वही And then ज्ञान इंद्रिय से mind, जब मन में आता है तो मन कहता है when ये the अच्छा है knowledge तो बहुत comes from the सुखदायक है, senses फलदायक है। to the mind thinks whether it is favorable or और फिर unfavorable. बुद्धि में जाता है तो And then उसको it goes to the buddhi. ढकता है तो फिर वो कहता है इसको And प्राप्त when करना चाहिए। buddhi हालांकि is बुद्धि covered को by कहना kama, चाहिए कि buddhi नहीं ये ideally ठीक buddhi नहीं should है, reject that this sense object is लेकिन not good जब for उसमें us, विवेक ढक you. जाता है But तो then कहती है it's हाँ the इसको vivek is covered, it प्राप्त starts करना planning चाहिए। to उसको acquire. प्राप्त करने की युक्ति फिर हमको बुद्धि It's देती है। the buddhi starts giving the logic और how to उसका जो acquire the भ्रम का object. मूल स्थान है And the वो main place है where this अहंकार। bewilderment lies is the ahankar. तो वास्तव में So actually, अहंकार के दो भाग हैं, ahankara has two एक divisions. जड़ भाग है, एक One is the चेतन भाग है। material part and the one is चेतन the भाग जो है conscious वो part. आत्मा के अंदर है, The जड़ conscious भाग जो part है is वो in the शरीर के atma अंदर है। and the material जब part इन is in the दोनों का जब body. मिलन होता है And when तो उसी these को two चित जड़ ग्रंथि combine, कहते हैं। then it is called the तो ये knot, काम जो the है वो chitjada चेतन granthi. भाग में नहीं है, So the kama is ये not in केवल the जड़ भाग में conscious ही है। part, it is only in the inert material चेतन part. भाग में तो क्योंकि हम भगवान के अंश The हैं conscious part, we और because वास्तव we में are आत्मा anshas of के अंदर Bhagavan, कोई दुख है नहीं, असंगो है, and अयम पुरुष actually है, there is no suffering in the सुख Atma. दुख से वो परे है। Atma is beyond क्योंकि happiness and suffering. उसका अध्यास जो है But because the वो जड़ adhyas अंश के साथ में हो गया है, उसने उसको अपने has ऊपर happened with आरोपित the कर लिया है inert part, the और superimposition has स्वरूप को भी happened. उसके ऊपर आरोपित कर लिया है, आपस में Uh, Both एक have दूसरे का superimposed on अध्यास each है। other. तो जड़ के गुण चेतन में प्रतिबिंबित होते हैं So the quality of matter gets और चेतन के reflected गुण जड़ में in the प्रतिबिंबित होते हैं। conscious being, and the qualities of conscious being get इसीलिए वो reflected in the inert चेतन में matter. उसके गुण हैं सत चित, That's why वो the उसी quality गुणों of से the प्रतिबिंबित होते conscious हैं तो being, हम शरीर की सत्ता रखने की कामना करते हैं, शरीर को सुखी when they रखने की get कामना reflected करते in हैं। the body, then we desire to keep the और जब जड़ अंश body के happy, satisfied. गुण जो हैं चेतन में प्रतिबिंबित होते हैं तो उसको लगता है कि मेरी And when उन्नति हो inert, जाएगी, the quality of inert matter gets मेरी reflected सत्ता in the बढ़ेगी, conscious being, then we start लगता है feeling कि that we मेरा will ज्ञान die, है, मैं दुखी हूँ। and I am तो इस ignorant, तरह का I जो am suffering. पारस्परिक अध्यास So इन दोनों में this चलता है mutual, this adhyas, it तो happens. आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, So the वही अंश है, Atma is an angsha of Bhagavan. इसलिए अंश का अंश की तरफ स्वाभाविक झुकाव होता है। So the angsha will have natural जैसे tendency to lean जल towards अंश the की ओर angshi. The खींचता part है will have natural वही tendency अंश to lean towards the whole. क्योंकि उसका मूल Like we see, the स्रोत water has a natural सूर्य है, tendency to move towards the ocean because अग्निहोत्र सूर्य की its तरह source is ocean only. मूल स्रोत Fire अग्निहोत्र has natural सूर्य है। tendency to move towards तो sun इसी प्रकार हम because its भगवान के origin अंश is हैं तो sun. वास्तव में हमारा So
since we are anshas of Bhagavan, so we have natural tendency to lean towards to him, यहाँ पर कहा गया ज्ञानम आवृत्त but देहिनम, our knowledge gets covered by तो kama. फिर हमारा झुकाव भगवान की Then तरफ, परमात्मा की we तरफ ना do होकर not विषय की तरफ हो जाता है, lean विषयों towards में भी Bhagavan. मन लगने लगता Our tendency is to lean है, तो इस towards विषय में भी हम sense संसार में ही objects. हैं, But in sense objects also, we are searching for happiness only, और आत्मा में हम because दुखी हैं, Bhagavan is Sukha Swarup. There is तो no उसको ना पहचान dukkha कर or suffering in the Atma, सांसारिक but we do पदार्थों में not सुख ढूंढने में, recognize that. Rather, उनकी सत्ता we बनाने में हम start लगे searching रहते for हैं, घर happiness बना in रहे हैं, these sense वेतन objects. हो, मकान हो, पारिवारिक बंधु हो, तो यही मोह है, So, this is moha, और ये ढकने के कारण होता है, and it happens due to उसका विवेक ढक covering. जाता है। When our इसलिए viveka, भगवान ने कहा discrimination कि gets covered. देहिनम यह वैरिणम, कि यहाँ That's पर why ये Bhagavan वैरी है, had said that और ये this is देहिनम the शब्द प्रयोग enemy. किया इस श्लोक में, पिछले श्लोक में जो हमने पढ़ा था, तो देहिनम का मतलब भी यही है कि देहो अस्ति अस्य इति देहिन, जिसका देह है, So यानी कि Dehinam here means one who has deha, one who has अगर body. आत्मा मुक्त हो जाए तो उसमें फिर If काम it is करने not का of कोई प्रभाव नहीं है, Atma, तो because देहिनम if शब्द Atma से gets यही समझ liberated, लें then there कि is जो no influence of शरीर Kama में on it. अध्यस्त है, So Dehinam refers उसके लिए to काम जो है what वही is विपरीत superimposed on the body. प्रभाव दिखाता है। Kama is the enemy for that. और मोह करने का मतलब है कि Having उसका moha जो means, के प्रकाश को ढक देता है, जैसे बिजली चली जाए तो यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, so तो if वास्तव में स्वभाव electricity goes away, here everything will be dark. So Atma is the Nitya Prakash. Its तो qualities उसको are दूर eternal. नहीं किया जा सकता है, So the उसको qualities हटाया नहीं cannot जा be सकता है, removed लेकिन from the प्रकाश Atma. ढक जाती है। But और from ये बहुत outside, ही if it gets covered, एक आश्चर्यजनक चीज है कि so अगर this कोई is a बल्ब great है, surprise वो that जल रहा suppose है, there is a bulb तो is उसको switched तुरंत आप on. ढक भी लेंगे तो बल्ब Even उसमें if you प्रकाश cover the डालता bulb, ही है, bulb उसको within ये नहीं itself, होता कि उसको it will बंद कर have दो फिर light. अंधेरा हो जाएगा। It is not that if it gets covered तो inside आत्मा bulb का also स्वयं there will be प्रकाश है, darkness. Similarly, और उस Atma has प्रकाश its को Swayam आप Prakash, बिजली के संचार and की तरह अंधेरा नहीं कर सकते हैं, उसको बाहर से so ही ढक सकते हैं, जैसे you यहाँ पर can ढक cover दिया। it externally, not internally. तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम को अपना So then, अज्ञान रहता है why does it happen that कि ईश्वर we मुझे have जानता our है कि agyan मैं हूँ, or तो फिर ignorance? मैं कौन हूँ The Jiva knows that I ये am, क्यों ज्ञान नहीं but होता? who I am, Jiva अगर does इसका not know ज्ञान that. है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, If it gets तो the समस्या का knowledge समाधान ही हो that I जाएगा। am not this body, I am लेकिन जब different ज्ञान from this होता है body, then all problem is solved. तो ये But बहुत ही it doesn't get आश्चर्यजनक that वस्तु है, knowledge. So it's a एक great दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा wonder संभव if you नहीं है think logically. कि It is आत्मा not को तो ढक possible लीजिए, माया से ढक लो, उसको that बाहर से किसी से even ढक if लो, you cover किसी it चीज से प्रकाश externally कर लो, by Maya, तो अंदर तो उसको by रहता Kama, ही है Krodh, whatever, कि मैं हूँ। internally, Atma knows that I आदमी am. जब क्रोधित हो It जाता है should be कभी कभी there. तो उसको तो पता रहता है कि मैं कौन हूँ, Even if the man is angry, he knows who I लेकिन am. But ये भगवान की माया है, this is इसलिए Bhagavan's भगवती Maya. माया यन्नयेन विरुध्यते। ये प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से किया था Vidurji had asked this question to Maitreya कि ये जो that how जीव is है, it possible that this जीवो Jiva, ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बंधनम, कि जीव तो ईश्वर है, ईश्वर मतलब स्वतंत्र है, Jiva who is Ishvara, तो ये Ishvara here बंधन इसका means कैसे हो जाएगा? Swatantra, free. How तो does उन्होंने it बताया be था कि become स्वयं bound? भगवतो माया, So Maitreya had ये replied भगवान की माया that है, इसलिए माया this का is मतलब है Bhagavan's Maya. अघटन घटन पटी ऐसी, कि जो चीज असंभव लगती है उसको भी संभव कर देती है, यही कहने So का Maya मतलब है, is जो that वास्तव में which संभव makes the कैसे हो impossible सकता है, also as possible. कि जो स्वयं Otherwise, प्रकाश how is it स्वरूप है, possible शब्दों तो अंतर that है, Atma, which is Swayam Prakash, तो you ये cover माया it का प्रभाव है। and it और falls in क्योंकि ये ignorance? भगवान की माया है, So this is तो the इसलिए power of ये Maya, सहायता and के बिना because it is Bhagavan's कोई Maya, भी इससे so मुक्त नहीं हो सकता, because that's why without the help of इसलिए आत्मा Bhagavan, जितना मर्जी nobody can get liberated from this Maya. So ज्ञान no अर्जन matter करे, how much you जब तक practice भगवान yoga की or कृपा नहीं jnana, होगी until and unless you have इससे the मुक्त नहीं हो mercy सकता। of Bhagavan,
it is not possible for you to get out इसलिए of भगवान the ने ये clutches of बताया Maya. कि ये प्रपद्यंते That's why मया Bhagavan says, जो केवल मेरी शरण लेते हैं only one who takes shelter of me क्योंकि can cross over this Maya. अगर इतनी शक्ति होती Because if we would माया के have प्रभाव को दूर कर so सकती much power to get rid of the influence of Maya, then we would have never been under the influence of तो ये Maya to माया begin with. कहते कि मुक्ति जो है वो भक्ति के बिना संभव नहीं है So, mukti is not possible without तो bhakti. भगवत जो भक्ति है वही वास्तव में मुक्ति है So, bhakti is real mukti क्योंकि because हम उनके अंश हैं और हम मोहित हैं we are his तस्य anshas and विमोहयति we are bewildered. इतै विमोहति मोहित मतलब विशेष रूप से मोहित है So, bewildered here, mohyati means नहीं है जैसे संसार में हम कुछ मोहित हो जाते हैं फिर हमारा दोह वो मोह दूर हो जाता है हम bewildered किसी in a very व्यक्ति से special प्यार way. करते हैं उसको समझते हैं Normally, when we are illusioned or bewildered in this world, we deal with somebody, we think he is friend, but then later we understand that no, that is not true. Then that moha goes away. लेकिन ये मोह ऐसा है जो अपने But आप हटने वाला this moha that we have, the moha of Maya, it will not go away on its own. विशेष रूप That's से why he अपने said आप के लिए vimohayati. कर देता है It covers our viveka तो itself. जो साधक लोग हैं उनको इस बात को ठीक से समझना है कि अगर हमको इस संसार सागर से पार So the होना है sadhaka has to understand तो carefully उद्देश्य that मुक्ति नहीं है if we have to है ना लेकिन अगर go मुक्ति है beyond तो this उसके लिए world, भक्ति करनी पड़ेगी although our goal is not और mukti, भक्ति का मतलब क्या है but even if it is भक्ति का bhakti, मतलब but ये even है if कि one wants mukti, he has to do जहाँ bhakti. आश्रय है सेवा भी वहीं करें आप So wherever जहाँ we have आश्रय ashray, wherever we have taken सेवा से shelter, दोनों एक हो we should do seva there only. Bhakti जैसे means हम wherever we have taken समाज में shelter, देखते हैं we do seva there. कार्यालय में कार्य करते हैं Like we see in the society when people work in an office, वो अपनी सेवा देते हैं so they work there. यानी कि उनका आश्रय स्थान वो कार्यालय है So वो that office is the place of their ashray. उसी से आश्रित है They are dependent on और that अपनी सेवा company भी or वहीं office, देते हैं and they लेकिन give their service also there only. But where is their preeti? Their preeti is in home. इसलिए ये भक्ति नहीं है So this is not bhakti. जब आपका आश्रय स्थान और प्रेमास्पद प्रेम का विषय दोनों एक होंगे तो उसी को भक्ति कहते हैं Bhakti happens when तो ये भी इसलिए you कहा have जाता है love कि इसको हमको समझना चाहिए wherever you जैसे have लोग taken ashray. मंदिर मठ बनाते हैं So we पुजारी see पूजा that करते people हैं make mathas, temples, तो सेवा the करने के pujari लिए is जाता doing है seva in उसमें temple, सब खर्चा so चलता he है is doing seva to Bhagavan लेकिन in the प्रीति temple, ठाकुर जी में नहीं is होती getting paid, but he doesn't have preeti or love लोग for ठाकुर जी the को deity. देखने के लिए People come और to take पुजारी darshan लोगों को of देखता है the deity, but the pujari is इसको focused on देखने the के लिए people. वो आ रहे हैं और दान दक्षिणा कर रहे हैं उनको ये So the देखता है कि people इसको are coming for taking darshan of सम्मान deity, कर they रहा are है giving donation for सेवा deity, कर रहा है but the जिनके pujari's कारण focus is on the people. जिनके That कारण means इसका he is not focused on the deity योगक्षेम चल रहा है where he has taken shelter. He doesn't इसलिए have ये preeti भक्ति for नहीं the है deity. तो So this जहाँ is not हमारा bhakti. आश्रय है वहीं So हमारी wherever भक्ति we have है ashray, wherever we have taken shelter, दान दक्षिणा if we have preeti, bhakti for that भक्ति person रसामृत सिंधु only, में इसको that is called तो bhakti. एक छोटे से वाक्य In में बोलते Bhakti हैं Rasamrit Sindhu, Sri Jiva Goswami जो also आसक्ति जहाँ speaks होती this. है वहीं In a small sentence, he जो आपका mentions उद्देश्य होता है that आसक्ति भी वहीं होगी wherever you have अगर उद्देश्य आपका कहीं है मानो उद्देश्य आपका attachment, that is your मुक्ति है uddeshya. If your और आप goal is mukti ठाकुर जी की सेवा भी कर रहे हैं तो वास्तव में वो भक्ति नहीं है क्योंकि and you are उद्देश्य doing आपका seva to मुक्ति है Bhagavan आपकी also, आसक्ति मुक्ति that की is है not bhakti because your attachment is towards mukti, not towards the Thakurji, not इसलिए towards the साधक को deity. देखना है कि That's why the हमारी sadhak भक्ति has to check हमारा आश्रय हमारी सेवा वो एक में है कि वो बटी हुई है
that और अगर वो बटी हुई है तो वो the क्यों sadhak has to बोल रहा check हूँ कि that is it divided. बात में क्यों बोल रहा हूँ My कि ये जो preeti is towards something else. I have taken इसको ashraya of बोलते Bhagavan. हैं काम, Is it divided? So if it is divided, it is because of kama, what Bhagavan is calling as enemy. और वो है क्योंकि हमारा And विवेक उस काम ने ढक दिया। that happens because our वास्तव में तो sense of भगवान के discrimination is भगवान covered के आश्रित by हैं kama. तो हमारा Actually, if समझना we पड़ता do है seva to Bhagavan, if we take shelter of Bhagavan, what is the loss for us? एक ढकने के कारण ये बात हम सुनते रहते हैं पर ये हमारे अंदर में प्रविष्ट नहीं होती We है, always hear about यानी कि हम bhakti, इसको अपनी but do बुद्धि not से get, पकड़ते नहीं है, but we are not able to फिर हम hold on उसको to it उपयोग करेंगे with our buddhi फिर उसका because it is उपयोग covered. इसलिए भी करेंगे If we क्योंकि can बुद्धि hold on to उसको it with our शीघ्र buddhi, पकड़ती है। then we work accordingly because कम से the कम quality of what is the quality of buddhi? Whatever it हमारी understands, बुद्धि जो we है work विषयों में accordingly. बटी हुई है तो विषयों की So व्यक्ति if व्यक्ति our बताएंगे कि buddhi ऐसे is ऐसे हमको अवसर caught मिले, up by the sense अवसर objects, मिलेगा और कैसे then हमको काम we करना चाहिए क्या just नहीं work करना to चाहिए। attain sense objects. लेकिन अगर हमारी बुद्धि भगवान में है, But if our buddhi is in अपनी Bhagavan, बुद्धि से हमने उसको समझ लिया है if we तो have फिर बुद्धि understood हम यही विवेक देगी कि ये what is काम Bhagavan by our ये buddhi, आपको then आपके our गोल से buddhi, दूर our ले जाएगा। viveka will say that whatever you are doing, it is going to इसलिए take you इसको away from समझना your बहुत goal. आवश्यक है That's why कि it is इसको very समझना important to understand this. Every sadhak should और understand इसी this कारण से carefully. भगवान ये सब बोल रहे हैं। That is why Bhagavan is explaining all this. हम श्लोक We पढ़ते keep रहते हैं, reading these verses, हम जाप भी we करते हैं, memorize them जाप also, भी करते हैं, लेकिन we कि recite इसकी them गहराई also, तक हमको जाना but we have to go deep तो हमें into ये the देखना purport है of कि the हमारी verse. कामना का So we विषय have क्या to है। check what do we actually desire within our heart. कामना का विषय भगवान है या I- कामना Do का we विषय actually want Bhagavan सांसारिक or we want चीजों है। worldly pleasures? तो कम से कम हमको So at इसमें हमको least स्पष्टता रहनी चाहिए कि we आप जो कर should रहे have हैं clarity within us. उसको कीजिए, Whatever you are doing, do it. लेकिन उसमें आपको But at स्पष्टता least you रहनी should have चाहिए clear understanding क्योंकि आपकी बुद्धि बताती तो because रहेगी कि आप ये then कर रहे हैं your लेकिन buddhi वास्तव will में keep telling you आप जो that बोलते हैं दूसरों को उसके you अनुरूप what you आप tell कार्य others, नहीं you करते, इसलिए yourself don't आपको follow बुद्धि that. बटी रहेगी। So your इसलिए buddhi बुद्धि will में keep pricking इसको you. जमाना, That's why इसको it is very नियत important करना बहुत to आवश्यक है। make it make get a firm understanding of इसलिए this बार in बार the buddhi. दूसरे अध्याय में You भगवान ने should. बुद्धि की बात की ना, That's why इसलिए again बार and बार again बोलेंगे Bhagavan कि spoke बुद्धि about buddhi in the मताम second शृण्वन्त chapter. ऐसा बुद्धि बता बुद्धि मताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। तो वास्तव में बुद्धि का काम यही है So actually क्योंकि this is the संसार job के of विषय में जो भी हम buddhi खोज रहे हैं because वो नहीं in खोज रहे, ये what you are जानने की looking कोशिश कर for रहे in हैं the sense objects in this कि world is also Bhagavan only. ये क्या चाहता है, सुख Ultimately, चाहता what है do you या want? सुख You want भोगना चाहता sukha, है, happiness. लेकिन सुख Every में person सुख wants है happiness and he wants to get rid of यस्य misery, स्पर्शाद्वेष suffering. दुख योनि एवते। But there is no आप sukha तो in बच्चे की this चोट से कह रहे हैं कि जितनी sense भी विषय objects. वस्तु है There is no ये sukha. योनि है, Bhagavan has told ये that they सुख are है, all sources of कहाँ कहा misery. उन्होंने कि ये सुख के स्रोत है। Where did he say that तो these are sources एक ही of खाई में pleasure? आप जाएं So if you और enter a coal mine आप सोचें कि वहाँ आपको गुलाब जामुन मिल जाएगा, and you look for a gulab jamun there, नहीं, that is not possible. कोयला ही मिलेगा आपको। There you will get coal only. अब आप कोयले को गुलाब जामुन समझ के खाने लगे तो वो आपकी बुद्धिमत्ता है, So if you लेकिन वही start तो eating आपको दुखी coal करेगा। thinking it is gulab नहीं jamun, तो that's your भगवान जो है वो foolishness, आनंद but you will not स्वरूप get है, it. आनंद स्वरूप है, सुख So स्वरूप है। Bhagavan is Sukha Swarup, he is सुख तो Ananda वहीं से Swarup. प्राप्त हो सकता So है, we विषय से can सुख get प्राप्त Sukha नहीं only हो from him सकता। only. It is not possible to derive जब तक pleasure हमारे from मन में sense ये निश्चय objects. नहीं होगा Until and unless we तो get काम हमारे convinced लगातार about this चलेगा। fact, till then karma will not leave भगवान us. कहते हैं कि इसको छोड़िए आप, So Bhagavan is telling you, give it up. इसी दृष्टि से कह रहे हैं। He is इसलिए telling आखिरी from this श्लोक में point of कहते view हैं only. तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अतः हे भरत Translation. श्रेष्ठ Therefore, O पहले best of the इंद्रियों को Bharatas, नियमित करके by first regulating the senses, त्याग दो, cast off this embodiment of यह sin or विवेक desire और which सत्य के destroys साक्षात्कार discernment and निश्चय immediate realization of truth.
उस काम को फिर वो कहते हैं कि So इस here काम he is again telling, एनम जो है संस्कृत में is telling enam in Sanskrit. प्रयोग किया जाता है जो वस्तु बहुत ही निकट हो, Enam is used for that object which is very close to us. रूपम, जो निकट वस्तु होती है उसके लिए Whatever is very close, तत्परोक्ष विजानीयात् अदस एतत् तत् और इदम, तो इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ती चैतदो रूपम, इदम शब्द का प्रयोग किया, इदम शरीरम कौनते है, so he used the word idam. इदम शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, तो इदम क्योंकि शरीर हमारे आत्मा, So he is telling idam because body is extremely close to the atma. But for kama he is using enam. एतत् के लिए आया, तो ये बिल्कुल अंदर ही घुसा हुआ है, तो So this is totally inside. उसमें जहाँ आत्मा एक तक ये हुए, तो कहते हैं कि इसको प्रजही, इसको आप, So he is telling prajahi means you remove this, destroy this. प्रजही, और उसके बाद में हेनम शब्द है श्लोक में, So here he is using the word prajahi and hyenam. So you can understand it in two ways. एक तरह से देख सकते हैं कि प्रजही ही एनम, इन्हीं के एक बार तो क्रिया होगी प्रजही, प्रजही का मतलब है कि इसको मारो, So one kriya will be prajahi, means you kill this. निश्चय रूप से इसको, निश्चय रूप से इसका हनन करो, Definitely kill this. प्रकृष्ट रूपेण जही प्रजही, From han dhatu we get prajahi. दूसरा ओहाक त्यागे धातु है, उसका रूप होगा तो प्रजही ही, The other rupa will be prajahihi and then enam, कि इसका त्याग कर दो, means you give it up. तो इस पर इसलिए दो मत हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रजही, So there are two types of understanding. प्रजही एनम है, क्योंकि काम को आप त्याग सकते हैं, मार Some नहीं people सकते। say it is prajahi hyenam and some people say it is prajahihi and then enam. शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, वहाँ कहते हैं इसको मारो, वहाँ तो जही शब्द, तो Bhagavan is telling you kill this. जही शब्द का प्रयोग किया, So he used the word jahi. इसलिए यहाँ भी जही ही है, That's why here also jahi is there. ही है, ना कि जही ही है। तो प्रकार से इसकी व्याख्या है। So it can be explained in two ways. Here we have used jahihi and taken the meaning give it up, because in the beginning you can only give it up. This is how it is explained, that in the beginning you can give it up and later when you become more powerful then you can kill it. Like Bhagavan Shiva, he burnt Kama by opening his eyes. तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, तो उसके तीन अधिष्ठान भगवान ने बताए पिछले। So Bhagavan told about three adhishthanas: senses, mind and intelligence. तो जैसा हम समझते हैं, as we understand, and Bhagavan will also speak that, so Bhagavan will say that mind is more powerful than senses and intellect is more, buddhi is more powerful than the mind. इसका मतलब ये है कि इंद्रिय के, so what it means is that मन के काम, मन में जो काम घुसा है उससे आसान है, और मन में जो काम घुसा है उसको the kama which has entered the mind, it is easier to give it up than the kama which has entered the buddhi, because buddhi is more powerful. So if kama enters the buddhi, buddhi will use it. Like suppose you have a friend, लेकिन एक थोड़ा कमजोर है, दूसरा उससे ज्यादा, let's say you have three friends and one is stronger than the other. तो अगर आप खेलते हैं उनके साथ में, so if you are playing with them, तो जो उसका कमजोर है उसको आप आराम से, you can easily defeat the weakest of the three. लेकिन अगर आप पहले ही आप थक गए तो आप कमजोर वाले से भी
हार जाएंगे। But if you got tired in the beginning only, you will get defeated by even the weakest one. So Bhagavan is telling the order. नियंत्रण कीजिए, So he is telling that first you regulate your मन को नियंत्रित senses, कीजिए, then you और फिर आप regulate your mind, then control mind, and then control the buddhi. क्योंकि आरंभ में काम इतना शक्तिशाली होता है कि आप Because in तुरंत the अपने beginning, मन को karma is so powerful नियंत्रित नहीं कर सकते, that और आप you will, in the beginning, किसी you भी will not be संकल्प का able to ध्यान control करते this हैं karma. In the beginning, won't be able to तो regulate. आपके मन में काम आता है कि ये इसको मैं So, चुरा लूं, if you see मैं somebody's इसको wealth फेंक or दूं, property and you get the karma तो मैं इसको that अपनी let जेब में me डाल के steal it because nobody is watching चला me, जाऊं, let me put it in my pocket and run away. कामना मन में है, So, the desire is there in the लेकिन mind, उसके लिए आपको but इंद्रियों का उपयोग करना पड़ेगा, you will have to use पैर your चला के वहां तक senses. जाने You पड़ेंगे, will have to हाथ से आप walk उस and वस्तु go को till there. उठाएंगे, You have to use your hands जेब में and रखोगे, grab छीन that लोगे, money, तो put it in your pocket, and then run ये जो away. कामना आई है, So, the kamana, the desire that you got in the mind, फिर भी it आप is difficult to इंद्रियों को stop that, but still और ये you सभी का can regulate your अनुभव senses. भी है And कि everyone has हृदय this में अनेक experience प्रकार की also कामनाएं आती that हैं, we get so many desires in the कहीं mind. जाते हैं, कुछ देखते हैं, Wherever we किसी go, we स्त्री watch, पुरुष को we see देखते so हैं, many things, we watch some आते man हैं, or woman, and we लेकिन get आप उस karma. पर अपनी But इच्छा को then क्रियान्वित तो नहीं करते हैं ना, you do not act on your desire every time. हमेशा अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से So रोकते हैं, और जो रोक नहीं we सकते वो समस्या में always पड़ते हैं, control our senses, and those who do not control, they fall into क्योंकि trouble. मन में जो कामना आई उसको But we have this experience. वो तो आ ही जाती है। अगर हमारी बुद्धि ज़्यादा दूषित नहीं हुई है तो हम बुद्धि का उपयोग करके अपनी इंद्रियों को रोक लेते हैं और If हम our गलत कार्य intelligence करते is हैं। not too polluted, then we can use it and तो refrain इसलिए from भगवान doing wrong कहते हैं कि activities. इंद्रियों को That's why Bhagavan is अपने आप telling नियंत्रण में कीजिए, that first और you जब इंद्रियों regulate the नियंत्रण में आ जाएंगी senses, तो मन and भी when the senses will तुरंत be नियंत्रण में आएगा, regulated, बुद्धि then नियंत्रण में there आएगा, will मन be नियंत्रण आएगा, some इंद्रिय control in नियंत्रण the आएगा। mind and तो then इस in the प्रकार buddhi से धीरे also. धीरे So in this way, आप slowly इस काम को त्याग देंगे, you will be इसको able छोड़ to देंगे। give up this karma. दी है, इसलिए अर्जुन का यहाँ बोलते हैं भरतर्षभा। That's why he is referring to Arjuna here as Bharatarshava. भरत जो बहुत बड़े That राजर्षि हुए, उनका Bharat, नाम who was भरत a है, great saintly और king, Arjun was अभी भी born आप श्रेष्ठ हैं। in that dynasty, and Bhagavan is telling you are also the greatest among them. राजा की कहानी भागवत में भी आती है कि किस प्रकार So से King Bharata's story is वो there अपने in राज्य को in Śrīmad-Bhāgavatam also, संबंधियों that के साथ how he gave up his kingdom, his family, relatives, everyone, और वन में gave up जाकर everything and went to वनवास में the उन्होंने भगवान की forest भक्ति की। and did his sadhana. वो बात अलग है कि वो एक हिरण के बच्चे Now में it is आसक्त हो another गए, point उसको that he got attached to the baby और deer, रहने पड़े, and then he had to take तो two वो more कथा दूसरी births. है। That is a different aspect, लेकिन इतना तो है कि but उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, he उन्हें made a great भरते हैं, इसलिए sacrifice. भरतर्षभ शब्द का जो प्रयोग किया है वो ये दिखाने के लिए कि आप He में was such a योग्यता है। powerful king. So that's why Bhagavan is referring to Arjun as Bharatarshava, that you also have that ability. पहले आप अपनी इंद्रियों को First नियमित of all, करके इस you पाप regulate your पाप को senses त्यागते हैं, and तो give up पापमानम this ही papa in the वर्तते। form of यहाँ karma. काम शब्द का So प्रयोग नहीं here करके instead of पापमानम karma, कहा he has used the word कि ये papa, पापी है। that this पापी is है मतलब sinful, आपको ये पाप कर्म में meaning it will प्रेरित engage you करता है, in लगाता papa, है। in sin. तो जो धर्म है, So the धर्म हमको यही सिखाता है। dharma teaches us this धर्म only. के नियम है The rules of dharma, अहिंसा, सत्य, like non-violence, अस्तेय इत्यादि, truthfulness, वो etc., हमको यही सिखाते हैं कि they हम teach किस us प्रकार this से only, अपनी इंद्रियों that को how we संयमित can करके
control our समाज में senses. तो इसलिए इंद्रिय का संयम करना हमको सिखाता है धर्म। So dharma teaches us to regulate senses. जैसा कि आज If there is no dharma in the society, परिणाम क्या like we see in today's situation, है? so then what is the result? कुछ भी People do not have any sense control. खाते हैं, कभी भी उठते They हैं, eat whatever they like, they wake up whenever they like, they make relationships with whomever they like. This is a great problem in today's society. Drugs, food, relationships. So why is it like that? Because there is no control, no regulation of senses, and nobody even talks about it. Our educational system, संयम के बारे में कुछ सिखाया it doesn't teach anything about sense control. There is no discussion on it. सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज Although this is the most, जैसे पहले this is a very important thing to be taught. Like it was told earlier, उदाहरण जो दिया कि आप अगर कार में बैठे हुए like you gave example that if you are sitting in the car and the driver is your enemy, then your life is in so much danger. So today's situation is like this only. और So everywhere there is uh, हर स्तर पर chaos, so much disturbance. Everywhere there is crime, डिजिटल अरेस्ट cyber crime, digital arrest. का मूल कारण क्या है? ये काम What is the main reason behind all this? Or desire only? दोष नहीं है। Because if somebody is not satisfied, dharma teaches us ईश्वर पर निधान। tapasya, swadhyay, तो आजकल हमारे जीवन में satisfaction. So in our life nowadays there is no tapasya, का कोई विचार ही नहीं है। there is no sense of cleanliness, no shuchi. Go wherever you like, eat whatever you like, eat whenever you like. संतोष नहीं, No satisfaction, स्वाध्याय नहीं, no swadhyay. ध्यान नहीं, There is no study of shastra, की तो बात ही छोड़ दीजिए। and forget about तो ये meditating on Bhagavan. So these are all limbs of dharma, नियम और 5 नियम दिए। 5 yamas and 5 niyamas which are mentioned in the Yoga Sutra. If society follows even this much, then so many problems जैसा कि पहले होता था। will stop. Which and earlier we used to see people used to follow all this. बच्चा भी धार्मिक उसमें संस्कार डाले जाएं तो उसकी समझ में भी If ना you आए। instill samskaras of dharma even in a child, आपकी समझ होनी चाहिए। लेकिन अगर उसको सुबह सिखाया जाए, माँ बाप अगर सिखाएं कि if parents teach the child that you should wake up before sunrise, दंत धावन करो, go to the toilet, brush your teeth, take bath, meditate on Bhagavan, do some japa, asan, pranayam. पहले होता था हमारे Earlier this used to happen in our country. This was taught. उसकी इंद्रियां स्वाभाविक संयमित रहेंगी। So then such a child it will be easy for him to regulate senses. Nowadays there is no such system. You wake up late and then what you want is bed tea. No bath, no brushing teeth. First you want to drink tea. So there is no sense of cleanliness. असर फिर हमारे शरीर पर पड़ता है। And then it affects the body. शरीर जो है वो अस्वस्थ रहता है और And then body becomes diseased. भी अस्वस्थ रहती है। And in a diseased body, intellect also becomes diseased. बुद्धया संभवन्ति। अगर शरीर स्वस्थ है तो बुद्धि If body is not healthy, अंग्रेजी में भी कहते हैं साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। if body is not healthy, intelligence will not be healthy. So nowadays our body is also diseased. Every person is taking some medicine or the other. विकृत हो जाती है, फिर विचारधारा हमारी So then buddhi will also become polluted like that. So what can you teach to such a person? Even if you teach some dharma to that person, आज ये बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि आज का युवा कहता है कि हम अपने धर्म के कारण ही पिछड़े हुए हैं। nowadays the youth says that because of dharma only we have become backward. So this is bewilderment, this is illusion. मतलब जो चीज जो ठीक चीज है उसको गलत समझना और गलत को ठीक समझना, ये तो So bewilderment means what is right you consider it as wrong, what is wrong you consider it as right.
dharma बुद्धि को स्वस्थ रखता है dharma makes और you उससे well आपको behaved. प्रसन्नता मिलेगी, Dharma makes you happy. तो उसके बारे में अब Your सोचने की mind, कोई आवश्यकता intelligence, नहीं है। everything makes it हम बस happy. उठा रहे हैं, इसके कारण हम दुखी But हैं, people think that because of dharma इससे only बड़ा we are कोई illusion नहीं unhappy. है। So what can be a bigger illusion than तो this? इसलिए भगवान कहते हैं कि पाप That's कर्म why जो भी Bhagavan है, says, तो आज तो इसको छोड़ने की कोई बात करता ही नहीं है, बल्कि इसको और जितना बढ़ावा दिया जाए, nowadays कितना काम nobody हो, wants तो to सिखाया give up जाता है desire. Rather, it कि is अपनी taught इच्छाओं को that you नियंत्रित should करना, have more फिक्स and more करना, desire, that करोड़ों you को should बनना है, fix your desire upon this, और जो that भी I want to सोचिए, become a millionaire, जो भी and then उपनिषद you जो should भी प्रवचन देते think हैं, about the daily. तो वैसे सिखाते हैं कि Motivational और speakers बढ़ाने के लिए, speak त्यागने like के लिए कोई this. बात नहीं करता है। तो So इसलिए they फिर वो teach you विवेक भी to नहीं रहता। have more and more इसीलिए desire, not to भगवान give ने it up. बताया कि ज्ञान विज्ञान नाशनम, आप So विवेक करो, then, आपके विवेक when we का lose our vivek also, इसका विनाश कर देता है। तो यहाँ दूसरी देखने वाली बात यह है कि भगवान ने इंद्रियाणी another शब्द point का here प्रयोग is किया है, यानी कि बहुवचन का प्रयोग किया that है। Bhagavan has used the यानी plural, कि ऐसा नहीं है कि केवल आप एक meaning इंद्रिय को it नियमित is करते not हैं that you just regulate तो one समझ लो आप sense सिद्ध हो गए। and then think that you have become कुछ perfect. लोग ऐसा भी करते हैं, Because some people do this मौन धारण also, कर लिया that they तो उन्होंने make इंद्रियों a पर take a नियंत्रण vow कर of लिया, silence. They have regulated their करते रहते speech, हैं, but then they continue writing, या खाने पर नियंत्रण नहीं है। or they do not तो have इंद्रियाणी का control मतलब over their सारी ही eating. इंद्रियों पर So नियंत्रण here करना है। Indriyani means to have to regulate और all the नियंत्रण करने का senses, मतलब ये नहीं and है कि हमें अपने regulating इंद्रियों को means विनष्ट करना है, regulating does not mean destroying the ये नहीं कि senses. आंख के कारण Uh, मेरा मन इधर उधर Not that भटकता है because तो of मैं आंख my को तोड़ eyes लूं, I run here and ऐसा there, विधान नहीं है। so I क्योंकि ऐसी I destroy my eyes only, because people tell such stories भागवत गीता also को that Bilvamangal Thakur ji, आकर्षित हो गया था he किसी became स्त्री को देखकर, attracted to some woman, तो उसने आंख फोड़ ली। and तो he आंख फोड़ने से आपका काम destroyed his ये eyes नहीं है only. कि काम So तो by आप पूरे कर destroying the सकते हैं, eyes, your बुद्धि में बैठा karma है, will not go away, because कैसे karma is वो seated inside करेगा, inside the mind also, buddhi लेकिन इंद्रियों में also. तो दिखाई देगा। Okay, if you're आंख now तो you सब don't दिखाई have देगा, eyes, so you cannot see the sense दिन रात object, कोई the उसको beautiful प्रभावित object, करते but रहते then हैं, you will see them in your dreams. Now you will see dreams in the day तो also, इसलिए because you भगवान don't have भगवान ने eyes. कहा कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि से So when अधिष्ठान, Bhagavan says, इंद्रियों को मैंने आपने खत्म भी कर दिया तो अंदर से जो even if you destroy the वेग sense है organ, आपका, जो मन but में है, still बुद्धि में, उसका क्या the करेंगे? vega, the pressure that you अगर have आपकी कोई within इंद्रिय नहीं for रही तो fulfilling उसको the बढ़ाने desire, what will you do about that? And if the प्रकट करने के now लिए, you don't have the senses तो अब आपका to मन विषय manifest और those desire, so विषयों now में what will happen is your mind will खोज become शुरू even हो जाएगी। more disturbed, because तो कहीं that जाएगी नहीं, force, वो that निरंतर power शक्ति है, एक वेग within है, the wave of karma उसका of प्रकट desire, इंद्रियों के द्वारा हम करते हैं। we express it through लेकिन our अगर senses. आपकी इंद्रियां नहीं रही तो वो शक्ति क्या करेगी, But जो काम now करने if वाला you have lost the शक्ति है senses वो only, नहीं है, तो फिर what आपका will you मन do with that विकृत हो pressure? जाएगी। It इसलिए आप will मानसिक रोगी हो it will जाएंगे। make you mentally disturbed. It बहुत will ऐसे become लोग हैं mentally unsound. मानसिक रोगी जो अपनी काम So वासना को often it पूरा दबा के happens रखते हैं, that people who try to समाज दिखावा के artificially पीछे, suppress वो their मानसिक रोगी हो calm, जाते हैं। their जैसे desire, कि they become मॉडर्न mentally साइकोलॉजी में unsound. आप देख सकते हैं, What we see in modern हालूसिनेशंस psychology, होना, the हेलुसिनेशंस hallucination and होना, all kinds of problems happen. तो अनेक प्रकार के विकार मन So में पैदा होंगे। तो इसलिए then भगवान we see a lot of ऐसा नहीं problems कह in the रहे कि mind. आप इंद्रियों को आप फोड़ So दीजिए, Bhagavan is not telling लेकिन that you destroy your sense उनको organs, नियंत्रण में but what रखिए। he is telling is that you keep them उनकी जो regulated. प्रवृत्ति है वो ना राग से हो ना द्वेष से हो, Whatever you engage, द्वेष से whichever प्रवृत्ति way होना you engage with your sense वो organs, भी it समस्या should है। not be done with raga द्वेष से dvesh. प्रवृत्ति होने का मतलब If you are ये engaging तो them नहीं है with कि वो dvesha, कामना नहीं करता है किसी चीज की, then also there is लेकिन अब problem, जिस चीज because की मैं कामना one नहीं thing करता is उसमें that you do द्वेष है, not desire. तो वो भी कामना ही है। But then that is also a kamana. कुछ लोग हैं जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, तो स्त्री So से there are संपर्क some नहीं करते, people लेकिन who are उसमें से द्वेष है, brahmacharis, sannyasis, they do not contact उनको women, गाली but देंगे, then अपशब्द they have बोलेंगे, dvesha, envy for women.
they use all kinds of bad language for women. Then, so that is also a kind of desire for women only. So Bhagavan says that you should maintain equanimity, equilibrium. का प्रयोग है, ऐसे ही उसका जो विरोधी है द्वेष, वो भी काम का ही रूप है, वो सिक्के का दूसरा So पहलू। raga is for kama only. So dvesh is just the other side of the coin. तो Raga and dvesh are two sides of the same coin. उसका मतलब ये नहीं कि हमको अपने आप को भूखा मारना है, लेकिन युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा So it is not that we should keep the sense organs always hungry, but whatever is their need, we should feed them accordingly. को भूखा भी नहीं मरना है। You don't have to die out of hunger, and don't do overeating also. और भागवत में भगवान In Śrīmad-Bhāgavatam, when Bhagavan is giving instruction to Uddhavji, इंद्रियों के बारे there he tells one very important point about indriyas, about senses. इंद्रियों में So Bhagavan says इंद्रिय है, जिह्वा है, that out of all the उसको senses, नियंत्रण करना बहुत कठिन है। it is extremely difficult to control the tongue. और वो कहते हैं कि अगर हम अपनी And जिह्वा he says कर लें, that if we can control the tongue, इंद्रियों को नियंत्रण में करना आसान हो it जाता will become very easy to control all the other senses. है। तावत जिते विजितेंद्रिय विजित अन्य इंद्रिय पुमान न जयत रसनम जितम सर्वम जिते रसे। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपने सब इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया, So Bhagavan says that if you have regulated all the senses, but your tongue is not under control, then लेकिन अगर आप you will not have control over any other कर लिया sense organ. But if you have regulated your tongue, सब चीज पर नियंत्रण कर लिया, then you have practically के दो got regulated all other senses. So tongue has इंद्रिय की, यानी कि एक ही two roles. It works as Jnanendriya and Karmendriya, both. कर्मेंद्रिय का काम करती है बोलने के लिए, Karmendriya means it is used for speaking, रसास्वादन, and Jnanendriya means it is used for tasting. कर सकती है। So it has double power because it performs both the action. कार्य करते हैं, But the other senses do one work only. What tongue has double role. नियंत्रण में रखना कठिन है। So it has lot of power, and that's why it is extremely difficult to control it. और हम जो अपने So से बोलते हैं, what we eat and what we speak, भगवान नियंत्रण है। having regulation, having control over both, लोग अपने आहार this is control of tongue. Some people, बोलते हैं, they control their eating, but they speak a lot, अपशब्द का प्रयोग करते हैं। or they use lot of foul language. तो इसलिए इसको नियंत्रण में लाना So आवश्यक है। controlling it is very important. कि अगर And we observe also that if you do upavas, fasting, कमजोर पड़ जाएंगे, your all other senses, they will become weak. सुनने की, सुनने Seeing, smelling, hearing, walking, working, लेकिन but खाने की इच्छा प्रबल होगी। the desire for eating will become very strong. तो ये भी इस बात को दर्शाती है कि ये शक्तिशाली So it shows that this tongue is a very powerful sense organ. हमारा And there is one more reason behind that. अस्तित्व है, Our existence भोजन पर निर्भर करता है। depends on food. अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा If we do not eat, we will die. तो इसलिए भी इसमें ज्यादा Will cease to exist. अब So भोजन करना ना छोड़ें। अगर आप मौन धारण कर लेते हैं तो उससे आपकी मृत्यु तो नहीं होगी, if you take a vow of silence, you will not die. ना देखें, If you shut your ears, or if you close your eyes, or if you block, तो हम फिर भी if you don't smell anything fragrant, still you will live. अगर हम भोजन ना करें But if you do not eat, how long can you survive? भी रहेंगे तो मुर्दे की तरह जीवित। And even if you survive, you will be almost like a dead person only. इसका नियंत्रण करना That's why कठिन है। it is difficult to control this. But if you can achieve control over this, बाकी पर नियंत्रण आसान होता है। then it is easy to control others. विभिन्न प्रकार के उपवास That's why in our dharma, all the different types of fasting which are prescribed, नियंत्रण
भी कारण है This नहीं is also one reason behind that, so that you get used to regulating हमको कुछ the तो tongue. नियंत्रण करना ही पड़ता है ना Because if when upvas or fasting is prescribed, then you have to हैं या do some control, whether you are eating fruits or only water. तो नियंत्रण तो करना ही पड़ता है या फिर जो So हम then you अपने have to control. धार्मिक कृत्य करते हैं उनमें कहा जाता है Or कि when we भोजन perform करिए religious ceremonies, and when Shastra prescribes that on such and such day you do not eat before this time or eat after this time only, so then you have to do some control. नियंत्रण उससे आता है और ये जो ज्ञान विज्ञान नाशनम तो नाशनम का अर्थ यहाँ पर वही है आवृत ढकना So here in Jnana Vijnana Nashanam, here Nashanam also means covering only. न सदृश धातु है न धातु का अर्थ ही होता है आदर्शन ना So दिखना Nash Dhatu means adarshana, not seeing. ज्ञान के दो अर्थ हैं एक विवेक अर्थ है और एक शास्त्रीय ज्ञान है So जो हम Gyan शास्त्र here has two meanings. One is Vivek, that sense of discrimination. Other is what we learn in Shastra. सद विवेक या चेतना तो ये वास्तव में उसको ढकता है So it gets covered. हमारे विवेक को ढकता है हमारी चेतना को Our discrimination gets covered. Consciousness gets covered. Our awareness gets covered. That's why lusty person, धार्मिक कृत्य करके या दूसरों को शोषण by doing irreligious activities or exploiting others or cheating others, he fulfills his desires. Why? जो हमको ये बताता है कि Because his Vivek नहीं करना tells him that this is wrong, we should not do it. It is against Shastra, तो हमारा जीवन and his buddhi gets covered. परायण होना चाहिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते So our buddhi should भगवान गीता में कहते हैं be surrendered to Shastra. It should work according to Shastra. के अनुसार As Bhagavan says that we should lead our life according to Shastra. When Shastra says do this, don't do this, में व्यवहार करना चाहिए knowing this, we should work in this world. अपना जीवन नहीं चलाएंगे If we do not work according to Shastra, then we will work according to Kama. और अगर हम शास्त्र से उसको नियंत्रित नहीं करते हैं तो So if we do not control, चलेगा regulate according to Shastra, then it will work according to desire. से केवल अर्थ और Because today in the society, there is no dharma and moksha, it is just artha and kama. Actually, it is kama only. Artha is also required. के विषय प्राप्त Earth is also earned by people today just to fulfill their kama. So there is only one purushartha remaining in today's society, that is kama. इतनी अस्त व्यस्तता पैदा है And because of that, there is so much chaos, चलता नहीं है disturbance in the society. मिलेगा Karma means we should get happiness, but there is no happiness in the sense objects. They are sources of misery, so we will get misery only. हम सुख चाहते So Gita is teaching us that we want happiness, and from where we will get happiness. हैं वो हमारे पास So our Viveka, we already have it from beginning. सकता है मैं Nobody can ले कहीं ले जा ऐसा है उसका steal away this नाश कोई हो नहीं सकता Tattva Gyan that we are the Atma. It can get covered. मैं आत्मा हूँ इसको I am Atma, nobody can destroy it, ज्ञान को ढका जा but this knowledge can be covered. उसी प्रकार मेरा विवेक भी ढक दिया जाता है वो विनष्ट नहीं Similarly, my Viveka sense of discrimination also can get covered. So like I am Atma, so Atma has its I-ness. है कि मैं दूसरों से भिन्न हूँ So Ahankara has this main quality that it मानता हूँ तो मेरे को ये separates us. We understand we are an individual different from other objects, other people. आत्मा के अंदर भी अहम है So Atma also has this aham, this I-ness. Means it also has this vivek, a sense of discrimination, that it is not this body, because this is the quality of aham. लेकिन वो ढक जाता है जब वो उसके साथ में तादात्म्य उत्पन्न होता है But it gets covered when it gets tadatmya with this material ahankar. चलना है So we have to get out of this. शिक्षा भगवान यहाँ पर दे रहे This is what Bhagavan is teaching here. हैं कहते हैं कि इसको आप छोड़ दीजिए So he is telling that you give it up. और छोड़ने का मतलब And giving up means ये नहीं है कि आप not विषय को छोड़ कर that चले जाएं you give up the sense objects and go somewhere else. People do this also. विषय को छोड़ देंगे लेकिन
So you give up the sense objects. You may give up sense objects, but your karma is seated within. वायरस है, बैक्टीरिया It है, is like suppose you have a bacteria or virus तो आप inside, सोचेंगे ये you बच्चा have बीमार पड़ा fever, हुआ है तो मैं इसी को and खाऊं। you think that I have fever, so let me leave this place. लोग ट्राई करके बाहर की परिस्थिति बदलना चाहते हैं। People mostly want to change their वो सोचेंगे कि external मेरी circumstances. भक्त लोग They भी ऐसा think, सोचते हैं, साधक भी सोचते हैं कि मेरी कामना sadhak also thinks इसकी आ that रही है, इसको I छोड़ के मैं am यहाँ चला getting जाऊं this इस स्थिति desire में। because I am in this place, so let me leave this situation or leave this place. क्या हुआ? तो ठीक है, नैन्सी ने हाथ खड़ा कर दिया, तो अभी आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। So we'll stop here, कोई and प्रश्न हो तो if पूछिए। you have any question, you can ask. परमानंद जी का प्रश्न है, भक्ति पथ पर चलने का प्रयास करते हुए हम काम Question: से while कैसे बच attempting to सकते walk on the हैं? path of bhakti, how can I avoid मैं karma? आसानी से बहक While जाता trying हूँ to और निर्णय walk करने the की path क्षमता of कम bhakti, हो I can जाती है get easily और carried मुझे away लगता and है कि lose my जैसे शांत ability to रहने से भी discriminate and simply किसी बात blindly का follow फर्क नहीं what पड़ता। someone tells me without मैं understanding जब किसी बात why की I should follow those अनसुनी समझता directions. हूँ क्योंकि मैं यह महसूस करना चाहता हूँ I follow कि blindly यही because I want to सही है feel that what I am और इसी doing के is साथ right साथ and अगर avoid मैं that I could be गलत wrong. हूँ, क्या But in मैं the end, I just waste time. एक Is रूप this a form of क्रिया में karma? परिणत And होता if हूँ क्या, so, how to और avoid इससे this? कैसे बचे? तो आप तो अपनी समस्या का समाधान खुद ही बता रहे हैं। आप खुद ही आपका प्रश्न का उत्तर तो आपके प्रश्न में ही छुपा हुआ है। आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा So करता हूँ, your तो answer फिर lies in the question itself. You are telling use should use buddhi. जब आप जानते So हैं, what when you know इसलिए what करते can हैं, somebody else do? When you know why you are doing this, दूसरा कहते हैं मैं उसको करता हूँ। that whatever others say I do लिख that. लीजिए अपनी So then you just ऐसा write नहीं in a है। diary that I will not do like this. शाम को रात को सोने से पहले अपनी And डायरी में evening at night before जो मैं sleep going to जो bed, निश्चय you किया था वो go करें, through a diary उस निश्चय and के check अनुसार काम that कीजिए। whatever I had determined, I had अगर आपको decided, काम did I नहीं work करना है accordingly? तो उसको भी When निश्चय you कीजिए उस know पर कि मैं इसको नहीं that करता you are हूँ, doing the wrong, if और you are फिर doing the wrong पछताएंगे thing, then you should be determined that you will not do it. रियली मेरे अंदर क्या कमी थी। And if you could तो not दोबारा से उस follow your determination, आपकी then you जो should analyze why you failed, डायरी है उसमें and then you लिखिए should analyze, you क्या should करता हूँ, find out what was the उसका reason. फिर विश्लेषण कीजिए, उसको Note in a diary what all उसको mistakes you विरोधाभास are कीजिए। making, and then do reflection daily. जो आप नहीं कर पा रहे हैं उस पर करने का What you are प्रयास not कीजिए, able to do, थोड़ा थोड़ा try to do बढ़ाइए। that, and मतलब किसी की कुछ try to गलती है तो improve है, slowly in थोड़ा bits and उसको pieces. कम कीजिए। बिल्कुल आप बंद नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा कम कीजिए उसको, फिर थोड़ा और If you बढ़ाइए। are overeating, then slowly you can समाधान reduce आपको that. अपने आप ही करना होगा इसमें, So in this way, you समस्या yourself का will have to solve the problem. और समाधान भी। You know what is the solution. संदीप जी का प्रश्न है, Next कृपया question. चित्त जड़ ग्रंथि को दोहराएं। Kindly explain Chit Jad Granthi इसका again. मतलब होता है कि हमारी आत्मा और शरीर का जो Chit Jad तादात्म्य, Granthi दोनों में means तादात्म्य तन एक है, there is tadatmya between the Atma and the material Ahankara. एक इकाई बन Both गया। have combined to become one जैसे unit. जल है, Like उसमें suppose there is नमक डालते हैं water and you तो put वो जल salt in बन the जाता है। water, तो जल और नमक तो वास्तव में जल तो then नमक बनता नहीं है, water does not become बन salt जाता है। and salt does not become water, तो एक ही दिखता but है then आपको, both उसमें combine लगता है कि together ये जल है and और ये it नमक है। looks like one unit जब only. नमक बाहर था When तब ये salt समझ was में नहीं outside, आता you था कि ये could जल है, say that this is salt, this जब is इन water, सबको जल में but डालते हैं after mixing it, तो सब जल ही दिखता है। now everything appears as water तो only. इसी को जड़ चित जड़ So, ग्रंथि कहते हैं। similarly, Chit Jad Granthi is like this. ऋषित जी का प्रश्न है, आपके Next एक आर्टिकल question. में आप फ्लो पुस्तक के बारे में बताते हैं, क्या संस्कार In का one article, ट्रांसफॉर्मेशन you में talk about फ्लो the पुस्तक book में लगाया Flow. हुआ है, फॉर्मूला लागू होता है? Is this transformation of samskara also discussed in that book Flow? कुछ नहीं बताया, So, answer, there is nothing about transformation of samskaras in that book. केवल बताया है कि फ्लो
कैसे It आपको just जब says आपका मन how केंद्रित होता है तो किस प्रकार when से your आप mind is कार्य सिद्धि focused, प्राप्त होती you achieve success in your life. यमुना जी का प्रश्न है, Next भगवान श्री question: कृष्ण के प्रति how to प्रीति develop कैसे ला preeti सकते with हैं Krishna स्वाभाविक रूप naturally से, so that ताकि वैदिक साधना Vaidhi हमें sadhana प्रीति does देने not में feel like रस की ना लगे। mechanical without है। इसके taste? लिए आपको गुरु की Answer: शरणागति लेनी होगी, for तो इस this you प्रकार से have to properly take shelter of पूर्ण Guru. रूप से आपको नाम You सिद्धि must प्राप्त be होगी। having some Guru तो गुरु की because कृपा से होता your है, name seems to be an जैसा initiated कि name. स्वयं कहा है, So this भगवत happens through mercy of Guru. भक्त करिचित ना मर्त्य बुद्ध्या सुयेत सर्वदेव मयो गुरु। सो भगवान तो हमारे सामने अभी उपस्थित नहीं है प्रकट रूप So में, Bhagavan is not वो गुरु रूप में available in front of us in manifest way. हमें So तो गुरु he की manifests करना as है, Guru. उनकी सेवा So करना और seeing उनका Guru as नाम Bhagavan, करना, doing seva to him, इसी से obeying भगवान him, में प्रीति होती है। this is जैसे how we गुरु में get आप preeti हो, for Bhagavan. वैसे ही भगवान में होंगे। The level of preeti that you have for Guru, that much you will have for कभी Bhagavan कभी इस also. चीज को भूल जाते हैं, So अभी mostly we संक्षिप्त समय forget में this, इस बात को although we know this समझते नहीं, point theoretically, we have इसको heard, we have भूलने नहीं studied, देना। but we have to follow that. प्रश्न है, मैथुन का आनंद लेने से किस प्रकार Next का question: what kind of dukha is obtained by enjoying ये कोई sex? पूछने वाली बात है क्या? संसार में उससे दुख क्या होता है? उससे What is there to ask in दोबारा this? करना You है, get bound in this, विपरीत परतंत्र हो जाते हैं, you then want to do it again and again. तात्कालिक सुख You मिल रहा है, become उसमें ये dependent सोचते हैं कि यहाँ तो on परतंत्र somebody हो ही else. रहा है, You get some temporary समाज जैसे happiness. लग रहा है कि इससे You क्या don't मिलता think है। that you are जब getting आपको dukha. व्यक्ति नहीं मिलता तब आपको दुख होता नहीं होता है, आपका मन विचलित So होता when है, you do not find that रहता है, person, then you become crazy, फिर you दुखी search रहते for हैं, that बीमार person, रहते हैं। and then you do not, when you do not get that, इस find प्रकार that person, then you संसार do में something else. मन Then you lose your सही physical जगह power केंद्रित नहीं होता है। and your mind cannot focus on what it should focus. प्रश्न है, बाबा जी ठाकुर जी Next की कृपा question: से मैं पिछले 3 साल से by नाम जप कर mercy रही of हूँ, Bhagavan, from लेकिन last 3 years I am doing Nam Japa. मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन कई बार But many times I have done pap of like Dhatu Nash के कारण without desire also. मैंने So ऐसी स्थिति में बार many बार times, even after taking sankalpa, I fall. भगवान सात्विक और सात्विक भी नियमित होना So चाहिए, answer: your food should be शक्ति sattvic, ज्यादा it should be regulated. शक्ति पैदा होगी तो उसके लिए फिर, और अगर शक्ति उससे ज़्यादा होती है तो उसके लिए फिर कुछ कहीं किसी भी द्वार से निकलना पड़ेगा उसको। तो ये आवश्यक है कि आपका भोजन संतुलित So नियमित it is important that your food should मात्रा be भी regulated, नियमित होनी चाहिए। sattvic, it should be in regulated quantity. संग आपका ऐसी चीज़ें मत पढ़िए, मत देखिए जिनसे आपके मन Don't में read, don't राग watch पैदा हो, such things which पेट को ठीक inflate रखना, your lust inside. So it is very important मल to विसर्जन ठीक से keep होना चाहिए, the stomach in proper गैस order. ना बने, There should be no gas formation. तो स्वास्थ्य को Bowel should be clean. ठीक रखिए। गीता में So भगवान keep कहते good हैं health. युक्ताहार विहार से। Like in Gita, Bhagavan says, Yuktahara संदीप जी Viharasya. पूछते हैं, 41 नंबर वाले श्लोक Next में question. विज्ञान क्या है? In this verse, what is Vigyan? ज्ञान क्या है? अलग अलग अर्थ हैं उसके। So Vigyan has different meanings. ज्ञान का मतलब परोक्ष ज्ञान है, One, विज्ञान का मतलब if अनुभवात्मक Gyan ज्ञान means है, Paroksha Gyan, then Vigyan is experiential और knowledge. अगर ज्ञान का अर्थ विवेक है, And if Gyan means विज्ञान discrimination, का मतलब then तत्व ज्ञान है। Vigyan means Tattva Gyan. आनंद लेने के प्रयास के विपरीत भक्ति मार्ग को Next question: what is the चुनने overall की reason for प्रेरणा क्या choosing है? path of bhakti as opposed to attempting जीवन के to सभी enjoy स्थानों पर life आनंद at all लेने के levels? प्रयास के विपरीत प्रयास के विपरीत विपरीत हम्म भक्ति मार्ग को चुनने का समग्र कारण क्या है? का सुनने का जी पता नहीं, मेरा प्रश्न समझ नहीं आया मेरे को क्या मतलब।
स्पष्ट कर सकते हो उसका प्रश्न का क्या अर्थ है? तुम्हारी समझ आया क्या प्रश्न है? तुम्हारी समझ आया? तो स्पष्ट बोलो ना यार, ये सब प्रयास व्यास क्या बोलो? आपका प्रश्न क्या ये है कि भौतिक सुख को छोड़कर भक्ति क्यों ली जाए, यही है क्या? पता नहीं यही प्रश्न है कि कुछ और है। प्रश्न पूछना भी एक कला है। ऐसे प्रश्न पूछो ताकि हमारी भी समझ में आ जाए। ऋषिक जी का पुनः प्रश्न है, मेरे कहने का मतलब था कि जिस प्रकार से फ्लो पुस्तक में बताया गया है कि So next question, I meant to ask that the way it is described in flow book, उसी प्रकार हमारा that difficulty level, there is a balanced state flow of difficulty level and skill level. त्याग कर देता है। Similarly, our ahankara कार्य में उबने also gives up in doing very difficult jobs. ये बोल रहे हैं वो कि क्या वो सही समझ रहे हैं? अब देखो, मैंने फ्लो पुस्तक पढ़ी थी कुछ 35 साल पहले। हम आप प्रश्न पूछ रहे हैं फ्लो पुस्तक की, पहले तो आप उस पुस्तक के बारे में मेरे से प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? So I read this flow book 35 years back. I don't know why you are asking me questions on this book. उदाहरण दिया था ना कि मैं फ्लो पुस्तक पढ़ा रहा हूँ। I was not teaching the book flow. I just took an example from there to explain the Siddhanta of Karma. What is the connection of today's class with the book flow? संबंधित हो You should ask questions which are related क्या लिखा to the subject matter. संस्कार की तो कोई बात नहीं है वहाँ पे। I don't remember what is written in that book, but what I remember, I don't remember that there is any mention of samskaras or anything in that. अपना श्लोक, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम।
ओम तत्सत।